I believe I can fly. Oh, hi, hello, hi. Oh, भाई तेज मैं देखता हूँ एलईडी का काम हो गया. हाय गाइस, अभी रुक जा, तेरा इंट्रोडक्शन कराता हूँ. आने दे, और दो तीन लोग को आने दे, फिर तेरा इंट्रोडक्शन कराते हैं. बहुत टाइम हो गया तेरे इंट्रोडक्शन से. क्या आपको लगता है कि मतलब डिब्रोयना के आने के बाद क्या आपको लगता है कि सिटी के हालचाल ठीक रहेंगे, कि सिटी वैसी ही रहेगी? um it's all about, I think there's no explanation. Okay, okay. आई थिंक इसने बहुत गंदी वीडियो ली है मेरी. कल भुवन ने बहुत गंदी वीडियो ली है मेरी. इट्स लाइक टॉप 10 फेल्स में भेजना होगा ना तो उसमें आएगी. नो, इट्स ऑल अबाउट सिटी की परफॉर्मेंस. अगर आप थोड़ा सोचो ना, एवरी एवरी स्टॉक और every company has their ups and downs, and you're like winning for four consecutive years. उसके बाद कुछ तो stagnation आएगा ना. मतलब I don't think there is any tactical or anything. It's just that होता है यार, हर टीम में होता है, हर उसमें होता है, हर कंपनी में होता है, पूरी लाइफ में हमेशा ये होता है. आई डोंट नो इट्स व्हाई आर पीपल गोइंग टू मच, उतना डीप क्यों कर रहे हो उसमें. एंड ऊपर से सेकंड हाफ में सिटी कम बैक करके जीतने वाली है, सो इट्स लाइक दे आर जस्ट वेस्टिंग द एनर्जी. आई डोंट थिंक दे आर गोना विन, बट ठीक है. ओनली किक ऑफ फिक्सचर फॉर, भाई लीक कर दिए तूने ऑलरेडी, और क्या बोलो, और कहाँ लीक करेगा तू, और तेरे पास सोर्सेस कहाँ है? व्हाट आई वाज थिंकिंग इज कि मैं एक मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है, जिसमें इंस्टाग्राम चैनल में जहाँ पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, वहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट जो चैनल है ना, ब्रॉडकास्ट चैनल चालू करूँ. उसमें तुम लोग कुछ भी डाल सकते हो, लाइक एफपीएल का, व्हेन द मैचेस आर गोइंग ऑन वी कैन डिस्कस, और व्हाटएवर जिसके प्लेयर्स है वी कैन सेलिब्रेट एंड ऑल ऑफ दैट. दैट विल बी लाइक अ गुड थिंग. ब्रॉडकास्ट में आई थिंक पीपल कैन टॉक अबाउट शिट, बट ये बच्चे जो है ना, बच्चे कुछ भी फिर बात करेंगे. That's the problem. So let's just look at what the news is. Uh, let's just start. Let's see what's the team news. How is everyone shaping up after the UCL midweek? देखते हैं. Let's just see injury news. Press conferences में कुछ नया बताया गया. Christopher Ayer is back and fit and ready to start, according to Thomas Frank, which should be good for Brentford in terms of clean sheets. थोड़ा potential बढ़ जाता है. It appears that Luke Shaw is only confirmed absentee. Okay. Can we see someone like Malaysia starting? हरियन सुधाकर पता नहीं, आ जाएंगे, कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है. Joel Ward had picked up a calf injury. No one cares. How does he still exist in this club? Joel Ward. I think Crystal Palace के, एक मिनट, क्रिस्टल पैलेस के, आई थिंक सेंटर बैक्स were something else. Oh, he's here. नाम लिया and he's here. भाई मेरे को बता दो इसका नाम कैसे बोलते हैं. मेरे को एक तो अभी तक मैं इसका नाम नहीं बोल पाया. ये सैक होने वाला है और मेरे को इसका नाम नहीं बोलना आता. मुझे कोई बताओ. Two unnamed players are being assessed. Emerson is suspended while Antonio का कार क्रैश हो गया. एंटोनियो के कार क्रैश के वजह से एक नया एफपीएल एसेट आया. सो वी शुड ऑलवेज लुक एट पॉजिटिव्स गाइस. ठीक है, चाहे कोई भी क्रैश वैश हो जाए. बोवन आ गया नंबर 9 में, विच इज ग्रेट न्यूज फॉर एफपीएल प्लेयर्स. तो यस, Enzo Maresca didn't give much. Okay, Fofana, okay, out, nothing else.
Pedro Neto is suspended, so for one game week, a game week, Madueke will 100% start. So if you want to take punt on someone, लोपा लोपटेगी लोपटेगी बोलते हैं लोपटेगी लोपटेगी बोलते हैं कि लोपाटेगी बोलते हैं लोपटेगी भाई यही इसमें ही मेरी जिंदगी निकल जाएगी सांचो विल प्ले एंड बॉल आउट ओके यस नहीं राइट विंग में तो आई थिंक मैडुवेके स्टार्ट्स राइट João Gomez is banned after reaching five Premier League cautions. A lot of players are very close to suspensions. Took 4 yellow cards में, and one of them is Rogers, I think. बहुत सारी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है. It appears that Akanji Stones and Ake remain injured. Rico Lewis is suspended. City probably the worst defense, one of the worst defenses amongst the top big teams. So who will we see at? मेरे को backline बता राहुल. राहुल पूरा मैनचेस्टर सिटी का backline बता. Do we see any random you know that one more player is there, his name is Pussy, will we see him starting? That is a question. Bob is also out, Rodri is also out. Gabriel trained with the team and Arteta is saying it's a possibility. झूठ बोल रहा है, शक्ल में देखो झूठ लिखा है, झूठ बोल रहा है. Christian Romero and Van der Ven were re-added injury list. Okay, मतलब spawn कर लिया, वापस spawn कर रहे हैं. प्ले हेंडरसन और फाबियांस्की इन गोल. एक मिनट रुक जा, एक मिनट बस खत्म कर रहा हूँ. मार्को सेंसी 3 months आउट. Tavernier is out, nothing new. और कोई न्यूज़ है हमारे पास? Kiesa and Diogo Jota could return. Alisson returned to start in Tuesday's Champions League win. João Gomez, so hopefully he also started, so that continues. Eddie Howe confirmed. Callum Wilson's okay, this is out, so Isaac is going to start. Isaac का injury issue है, वरना I think great fixtures. वेटमैन ओके. इसके अलावा आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट कोई चीज है. लेट्स गो टू दी टीम. लास्ट गेम में बहुत बकवास गया था बिकॉज कैप्टनसी, इट्स ऑल अबाउट कैप्टनसी. एट द एंड चाहे कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, इट्स ऑल अबाउट कैप्टनसी. Yeah, Chiesa plays for Pool. Last week he played for the under-21s, so looks like he's coming back into some kind of fitness, but yeah, it doesn't look that easy. At the keeper, I have Raya starting. So, even if Gabriel misses out, he's there for the clean sheet. Uh, yeah, I think लास्ट वीक का अगर आपने लाइनअप देखा होगा तो लेफ्ट विंग में ना आइट नूरी खेल रहा था, लेफ्ट विंग बैक में डॉकर्टी खेल रहा था, एंड लेफ्ट बैक में कोई और खेल रहा था, नाम भी नहीं मालूम है मुझे. तो आइट नूरी इज प्लेइंग वेरी हाई अप द पिच, बट आइट नूरी इज लाइक रियली like unpredictable in terms of what when will he perform. So Ait Nouri का वो चक्कर है. Raya, I think covers up for me because Gabriel का पता नहीं, because Gabriel too. The thing is, Gabriel is back in the training, but I think उसके minutes limited होंगे because UCL में भी खिलाना है. So I'm not so sure if he's gonna start versus Everton. इसके बाद के fixtures देखे, Crystal Palace fixtures are pretty good. I got in João Gomez last game week before the postponement of the game. So that was one. I think it's not a bad decision, even though the fixtures are looking good for Liverpool. A lot of managers are looking to bring in Trent. I think Trent ka abhi bhi totally fixtures are not yet confirmed. Hi man bhai, hi. आप भी टीम बना लो FPL के. I don't think you play FPL, but टीम बना लो. उसके बाद मिडफील्ड में आते हैं तो गॉर्डन ने धोखा दिया है लास्ट गेम में, बहुत बड़ा धोखा दिया है. एंड ऊपर से हावी बार्न्स स्टार्टेड एंड ही स्कोर्ड. सो दैट इज काइंड ऑफ अ बिग लेट डाउन फॉर मी. मतलब ये ट्रांसफर बहुत लेट डाउन किया है मुझे, बिकॉज आई कुड हैव गॉटन बोवेन और Bruno Fernandes, who both scored, and I picked Gordon over him. I don't know if this is a right choice or not, but it's going to be like one more game we can give for I can give for Gordon. Midfield में Saka, Palmer and Salah. Captaincy will be a big problem, a big headache. Yeah, exactly. Mbeumo, even Rogers performed in last to last game week. So it's like उस price range में मैंने Gordon को चुना and he didn't even start, and other players in that same ownership bracket had scored. So it was terrible for me. Apart from captaincy का तो चलो I don't mind. It was the risk that I took. Palmer, Saka versus Palmer versus Salah ka captaincy is like totally equal. All of them are equally capable of hauling, and सबसे ज़्यादा potential यहाँ पे हो जाता है Palmer का because of what happened in the last game week, right?
उसके बाद फॉरवर्ड्स में आते हैं जाओ पेड्रो, सोलांके एंड निकोलस जैक्सन। निकोलस जैक्सन एक ऐसा बंदा है जिसको जब कुछ भी नहीं करेगा ना तो भी मैं उसको टीम में रखूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ मेनी गोल्स चेल्सी स्कोर, एंड कुकू इज अ डाउट व्हिच मींस मे बी ही विल प्ले 90 मिनट्स। दैट इज अ गुड थिंग फॉर निकोलस जैक्सन। इसके अलावा जाओ पेड्रो, सोलांके, आई थिंक इनका टाइमर चालू हो चुका है, ये कभी भी आई थिंक आई कैन ट्रांसफर देम आउट इन द नेक्स्ट 2 game weeks फॉर श्योर। Single-handedly fucking my rank every game. Yeah, why don't you get him in? Why don't you get him in? Like you have Haaland, right? I think Haaland को तो एक और game week दे सकता है, United है, just because United है. Let me just see इसके बाद Aston Villa tough. Everton is good, Leicester is good, but yeah, it doesn't look good for Haaland. Yeah. Okay, bench में आप Rico Lewis, nothing more to play. So captaincy is right now on Salah. Uh, okay, the first अच्छा early kickoff है, early kickoff है. एक मिनट, सिवाय पामर के आई थिंक आर्सेनल, लिवरपूल, न्यूकासल, वर्ल्स, चारों का अर्ली किक ऑफ है। पामर इज प्लेइंग ऑन मंडे, मतलब संडे नाइट। व्हाई डू वी हैव अ मंडे नाइट फिक्चर? आई थिंक मेरा कोई प्लेयर भी नहीं है व्हिच इज, हाँ, आई थिंक मंडे नाइट फिक्चर ऑफ चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। नाउ द थिंग इज ब्रेंटफोर्ड हैज द वर्स्ट अवे रिकॉर्ड इन द लीग एंड एक मिनट रुक जाओ, मैंने एक चीज नोट डाउन करके रखी थी। हाँ, ओके, सो एज आई वाज सेइंग ब्रेंटफोर्ड हैज द वर्स्ट अवे रिकॉर्ड इन द लीग एंड उसके बाद तो इसलिए पामर को कैप्टन करना मच मेक्स मच मोर सेंस, बट फुलहैम का बैसी और एंडरसन नहीं है, तो द मेन सेंटर बैक्स ऑफ फुलहैम आर नॉट प्लेइंग, सो दैट इज व्हाई लाइक इट्स द Salah being the best in the world probably right now, and versus Fulham जिसके main defenders है ही नहीं, so that is one big shout. That is why people are like, mostly I'll also probably go for Salah only. But I understand why people are captaining Palmer right now. And Saka, I don't know. Brentford is gonna hold. Is gonna also not Brentford. Everton is gonna park the bus. I don't know if that helps Saka or not against rigid defenses. I'm not so sure. If I just look at their home performance, let me just check. Home May 2 points versus United, 13 points versus Nottingham Forest, Great versus Liverpool, Southampton against 16 points. Yeah, I mean, Saka is not bad. I think home performance में Saka is not bad. It's just that Everton can, park the bus. That's the problem. That's the issue. Yeah, coming to the question segment, Suresh का पहले क्या था? Henderson or Fabianski in goal? Who is Henderson playing? Henderson is Crystal Palace का है. Crystal Palace. Crystal Palace playing Brighton. No way they are gonna. I think park कर सकते हैं, पर Brighton I think concede कर लेगी तो मतलब they will kind of respond. Yeah, who is West Ham playing? West Ham is playing Bournemouth. Bournemouth is also scoring goals, bro. I think it's a tough choice. Just check who is making more saves. I think Fabianski is making more saves, so go with Fabianski. Because I think Lopetegui is kind of under pressure, तो वो थोड़ा defensive भी खेलने वाला है. And Bowen के number 9 जाने से I think West Ham will convert the chances and they might hold after just scoring 1 or 2 goals. And Fabianski is more likely to make more saves, even though Bournemouth is scoring. Crystal Palace तो खाएगी भाई, Brighton at home तो खाएगी. So I'll say start Fabianski. Even I have Fabianski on bench, but I'm starting Raya. Who is the second question? क्या है? Fix me quick. Okay, एक मिनट रुक जा. 4% battery. I really appreciate Abesh like joining from Mumbai. मतलब क्या कर रहा है तू? मतलब क्या कर क्या रहा है? मतलब इन द सेंस मुंबई में क्या कर रहा है और स्ट्रीम क्यों देख रहा है? 46 points, not bad. Flecken is a big disappointment this season. I think very overhyped goalkeeper. Lewis, okay. Midfield में okay. Midfield looks settled for you because Salah comes in. Ings is an issue. Ings को निकालो, please. Ings को निकालो. We'll discuss the forwards. Ings and Rico Lewis should be removed. Let's just look at some transfers right now. Transfers में सबसे ऊपर होगा Isaac. You can do Ings to Isaac. Isaac का only one problem है guys. Fixtures are pretty good and even Callum Wilson is out for a while. So there's no issue regarding कि मतलब ये ज़्यादा कम minutes मिलेंगे. The problem is कि injury issues होते हैं Isaac को. So for Abe, the first transfer for you will be for Ings to Isaac. Okay, Ings to Isaac, probably the first one, or Obafemi. Yeah, Obafemi, a legendary player for sure.
Uh, introducing Rahul Agarwal, he's our athletic representative. Athletic के लिए आर्टिकल लिखता है for Manchester City, इसलिए अभी डूब रखी है City. So yeah, he's gonna tell us ki who's gonna play in City, who's not gonna play. Uh, okay, City की backline: Nunes, Walker, Diaz. For I think kids are watching my stream, so I would rather not say this thing. And Guardiola back five. Guardiola is back. I don't know. I've not been watching City ke games. Yes, Samadata. Yes, agreed. So Abe first transfer would be Ings to Isaac. Defense mein, let's just look at defenders right now. I think if you don't have an Arsenal defender, double up. Arsenal, Everton, Aston Villa, no. Bournemouth, no. Flecken you have for Brentford. Brighton K, Weltman is 50-50. Chelsea's defenders you can look at. I think आने वाले next 5-6 fixtures में I expect at least 2 clean sheets from Chelsea. So you can go for Cucurella, Colville are the two options. Abe. So first transfer I would recommend is from Ings to Isaac. Second would be get a Chelsea defender because उसके अलावा I don't see. I don't see. You can get in Gomez of Liverpool if you don't. If you are looking at a Liverpool defense, Liverpool defense आने वाले में because a lot of managers are looking towards Trent Arnold नहीं हाँ ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड आई थिंक सुयश ऐसा बंदा होगा जो आर्नल्ड की तरफ देख रहा होगा ट्रेंट की तरफ देख रहा होगा न्यूकासल के डिफेंस के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ द न्यू मैनेजर आई थिंक लेस्टर के अगेंस्ट it won't be easy. It won't be easy. Spurs is all over the place. Wolves में Ait Nouri, I think बहुत सारे लोग के पास है. West Ham, no, you cannot trust West Ham with clean sheets. So for defense options, guys, two teams that you can look at, that is Chelsea and Liverpool. And अगर दोनों की बात करूँ तो Colville और Gomez. And forwards में for now we have just looked at Isaac. इसके अलावा और ट्रांसफर्स की बात करें तो Isaac is the most transferred and उसके बाद Enzo Fernandez. ये बंदा अपने विलन आर्क में चल रहा है आफ्टर डाइवोर्स 8 इन्वॉल्वमेंट्स इन 8 गोल्स डार्बी प्रेडिक्शंस पाव भाजी खाने जा रहा हूँ ओ क्रेजी भाई पिक्चर्स भेजना और डार्बी प्रेडिक्शंस एक मिनट रुक जाओ हाँ Manchester City versus Man United. I think Man United has usually, this type of game is for Paul Pogba. If you, Paul Pogba used to show up in these kind of games. I think it will be a 2-2. I wouldn't say. I think Pogba के भी एक game में 2-2 हुआ था ना. He scored 2 goals. Comeback हुआ था. But yeah, I'll say 2-2. I don't think City wins. But I don't think United wins either. I'll say 2-2 for Derby. Derby क्या बताओ भाई Manchester Derby के predictions बताओ. हाँ उसके बाद okay let's just see more transfers. Saliba, yes, definitely a lot of transfers out for Gabriel. Defender बता जल्दी 5 million और under. हाँ रुक जाना भाई थोड़ा सब्र करो भाई. I'll say I'll send ना मैंने तो 2 बता दिए भाई. मैंने 2 बता दिए. I said Colville and Gomez. Both are under 5 million, right? भाई एक मिनट रुक जाओ सुयो मेरे को ले लो या डेफिनेटली सुयो इसका प्राइस हम अबे का प्राइस रखेंगे फॉर 3.2 मिलियन द चीपेस्ट डिफेंडर एवर भाई इसी बात में हम फुटबॉल की बात करते हैं हम फुटबॉल कब खेलेंगे No, it's a serious question now. I mean, it's getting out of hand. How many times have we played together in 2024? It's a concern. Hello Siddharth bhai. Hello Siddharth. कैसे हो? Start Johnson or Mbeumo. Let me just check. I think Southampton के against Johnson might be a better option, but let me just check Brentford. Brentford खेल लिए Chelsea को. Just go for Johnson. मतलब Johnson start करता है, so he's always involved. Mbeumo का शोर नहीं है, even though Mbeumo last game week में थोड़ा decent किया उसने. But I think Johnson versus Southampton has an injury and a lot of suspended players as well. Johnson जब भी start करता है, he's somewhere involved. कैसे भी involved रहता ही वो. ठीक है? तो I'll say Johnson. डिफेंडर्स में हमने बात की अगेंस्ट कॉलवेल और गोमेस की. लेट्स जस्ट लुक एट सम मिडफील्डर्स राइट नाउ. मिडफील्डर्स में व्हाट आर द ऑप्शंस आर पीपल लुकिंग एट? मिडफील्डर्स में सबसे ऊपर एंजो फर्नांडेस 8 इन्वॉल्वमेंट्स इन लास्ट 8 गेम्स. 5 मिलियन डिफेंडर है, बेंच में रखो फिर उसको इट्स लाइक उसको खिलाओ फिर बेंच पे रख सकते हो. यू कैन रोटेट एंजो फर्नांडेस अ लॉट.
या आई मीन व्हाट एल्स डू आई डू? हाय अमोकपाल, देखो अमोकपाल, देखो ऐसे ऐसे लोगों की एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि ये लोग एफपीएल नहीं खेल रहे हैं, ये लोग बहुत बिंदास एडवाइस देंगे। ओके, I have three. A lot of Amok people are confused because should a captain matter? Yeah, definitely. In heaven, definitely. आप करके heaven जा सकते हो, फिर उसको ट्रिपल कैप्टन कर सकते हो. There are. I want help, Amok. People want to. People have three amazing players right now. Saka, who's facing Everton, Palmer, who's facing Brentford, and Salah, who's facing Fulham. Who would you captain? कैप्टन किसको करोगे इन तीनों में से? ठीक है. I am on Fulham right now. I'm sorry, I am on Salah right now because Fulham के दो CBs are unavailable. पामर का एडवांटेज ये है, कि ब्रेंटफोर्ड हैज द वर्स्ट अवे रिकॉर्ड इन द लीग, एंड देन उसके बाद साका का एडवांटेज है. ओके, I see some siblings bias here. Do I see a siblings bias here? Because Amok Pal ke brother is like a Arsenal fan. Because man will cook even if he doesn't score, but brother cook करने के points मिलते तो मैं फिर तो मैं वार्डी को रखता अपने टीम में. Yeah, yeah, definitely. It's not really a good option. Really good option. I think Saka at home, and Arsenal are not gonna drop points. They will never lose. Matlab, they will never miss a game to drop points now. It's too late for Arsenal to drop points now. So for Amok Pal, the captain is Saka. अब बाकी लोग के कैप्टन्स कौन है बताओ? आई थिंक मेजॉरिटी विल गो विद साला इज व्हाट आई एम थिंकिंग. उसके बाद पामर बिकॉज ऑफ द लास्ट गेम वीक्स परफॉर्मेंस. I think there will be a ownership battle, expected ownership battle between Palmer and Salah. Jackson will haul. I'm from future. Hopefully, the thing is Jackson की अच्छी बात क्या है कि मतलब Nkunku is a doubt for this game week, so Jackson will get a lot of minutes. So that is the advantage. मच्छर के हाँ भाई 7 likes हो गया थाला for a reason. Yes, I wanna do Haaland and go all in. मतलब you want to. I know it's a differential. I know it's a differential, and it's not bad because United तो खुली हुई है. To be very honest, मेरे को United में कोई difference नहीं लगता. टेन हैग के जाने के बाद से ना अभी नए मैनेजर के आने से मेरे को कोई डिफरेंस नहीं लगता. इट्स जस्ट ओवर हाइप्ड. अभी अभी यूनाइटेड में कोई गोल्स पड़ते हैं तो फिर वो बोलता है इंडिविजुअल मिस्टेक्स. पहले क्या हो रहे थे? पहले पहले भी सेम चीज हो रहे थे, बट हाँ टेन हैग भी पागल है कि मतलब वो हाई लाइन खिला रहा है. क्यों खिला रहा है? तो इतने विंग बैक्स को इतना आगे क्यों खिला रहा है? It's been 6 games. Chill. Okay. हालैंड मत कर भाई, हगो है अभी. या एग्जैक्टली. मतलब देख अमोग, इट्स सिंपल एज दैट. मैं तेरे को समझा दूंगा, तू समझ जाएगा. बट सुयश इज लाइक क्रेजी. इट्स अबाउट यू हैव अ 15 मिलियन प्लेयर. एफपीएल में तुम 15 मिलियन प्लेयर को रख रहे हो, एंड इट्स इफ दैट पर्सन इज नॉट स्कोरिंग मच, देन व्हाट्स द पॉइंट? फोन गोइंग जीजी. ट्रिपल कैप. ट्रिपल कैप. ट्रिपल कैप. नो डोंट ट्रिपल कैप. नो ब्रदर, आप पाव भाजी खाओ. आप पाव भाजी खाओ. Okay, let's just look at teams. I think थोड़े लोगों की टीम्स देखते हैं. 236. आई थिंक तेरा मेरे को याद ही हो गया. 267,445. लास्ट गेम वीक में पॉइंट्स आए हैं 49. मतलब इट्स बेटर देन मी, मतलब जो भी हो. ओके, साला इस टाइम खेलेगा, कूनिया भी खेलेगा. आई थिंक यू हैव अ ग्रेट टीम. आई थिंक ग्रेट टीम है. बस जस्टिन को बेंच करो. जस्टिन या फिर डालो को बेंच करो एंड स्टार्ट साला एंड रोल द ट्रांसफर. राशफोर्ड भी सही है. आई थिंक राशफोर्ड इज अ ग्रेट डिफरेंशियल फॉर द अपकमिंग गेम वीक. सो ब्रदर. ओके, सो या आई थिंक साला को खिलाओ, बेंच करो जस्टिन या फिर डालो को. आई वुड से बेंच जस्टिन बिकॉज एक अवे फिक्चर है वर्सेस न्यूकासल, जिसका फॉर्म धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, एंड अभी आपको कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. लेट्स लुक एट सिद्धार्थ's टीम. सिद्धार्थ हैज अ रियली गुड रैंक राइट नाउ, इज व्हाट ही टोल्ड मी लास्ट टाइम. एग्जैक्टली मालूम नहीं है. 22205056 53 points. Okay, 53 points. Embuemo got a 13 pointer. Cells, okay, Cells के वैसे क्या चल रहे फिक्चर्स? It's something that nil-nil वाले मेरे को फिक्चर्स यहाँ पे दिख रहे हैं.
ग्वाडियोल, ग्वाडियोल, व्हाई डू यू हैव ग्वाडियोल? आई थिंक बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. आई थिंक ही कैन गेट अ क्लीन शीट बट इट्स टू एक्सपेंसिव टू हैव इन योर टीम. Ait Nouri, Jurin Timber, Palmer, Saka, Mboemo. Okay, you don't have. Okay, you have Salah. Salah को अंदर डालो, and who will you bench? I think benching is a headache for you because जिसको भी तू bench करेगा, that person is most likely to score. If you're planning to bench João Pedro, Cunha, or even Johnson, it's like, oh, that's why you're asking Mboemo. तो Mboemo को bench करने वाला था. You're gonna bench Mboemo. I think I'm not sure. I think that can hurt, but हाँ मतलब you have to start Salah, so you have to bench someone. Haaland, a City fan. Okay, so we have two City fans. I mean, इसी तुम इसी स्ट्रीम में तुम मेजोरिटी में हो सकते हो. ये देखो आ गया, आ गया, आ गया, आ गया. रुका नहीं, 1 मिनट नहीं रुका गया, 1 मिनट नहीं रुका गया. इससे इसी स्ट्रीम में तुम मेजोरिटी में हो सकते हो और कुछ नहीं. हाँ, so it's like a decent team. Just put in Salah and roll. I'm not sure about Guardiola यार. I'm not sure. आने वाले fixtures, hopefully City convert. मतलब they just prove me wrong in the sense कि City convert करना चालू करे अपने matches. Okay? Uh, अच्छा चल ठीक है. हाँ, what else? What else? और हमने दो teams check कर ली. हाँ, so one thing I want to look up on Twitter if Gabriel का कुछ information है because I don't know, Saliba was my planned transfer. It's a late fitness test for Gabriel. Okay, that is like one source on Twitter. Haaland versus United, yeah, definitely. I think एक तो मारेगा ही Haaland because इतने open जगह में it's like you have gone to a I don't want to say that right now. It's like you have gone to a नहीं मैं बोलना नहीं चाहता, थोड़ा illegal सा है. ठीक है. It's like okay. 4 games, 6 goals, 3 assists. Motherfucking will bang today. KSI said on FPL Answer Gabriel is out. KSI, KSI is on FPL anti stream. What the fuck? What the fuck? KSI. I know KSI FPL खेलता है. FPL is like KSI is playing FPL like very seriously this game week. उनका इस गेम वीक नहीं सॉरी इस सीजन बिकॉज उनका कैलफ्रीजी कैलक्स ये सब खेलते हैं. सो आई थिंक केएसआई इज प्लेइंग प्रीटी सीरियसली. या Gabriel is out. I mean, yeah, obviously. Crystal Palace, Ipswich. I don't know. It kind of feels shitty, but I think I'm gonna make the move. I think I'm gonna make the move. इतना भाई इतना क्लियर ही नहीं होता है बिल्कुल भी. It's like Arteta has to do better, yeah. Arteta has to do better. I'm gonna make the transfer. First transfer, Gabriel to Saliba is done. I have double defense, so even if Gabriel shows up and scored a header, hopefully Raya and Gabriel के दोनों points मिला के at least Gabriel के हो जाए तो भी चलेगा. KSI's FPL team is probably full Arsenal. No, he actually has a decent team. He has been following a lot of content creators on. अच्छा मैंने share नहीं किया. I just made a move. मैंने share नहीं किया. I just made a move from Gabriel to Saliba. Hopefully, I said कि Raya and Saliba cover up Gabriel's points, even if Gabriel shows up and scores. टिम्बर नहीं, अब वही तो भाई यही मैंने तेरे से 2-3 गेम वीक पहले मैंने से क्वेश्चन पूछा था मैंने तेरे से कि टिम्बर लूं या फिर राया लूं. एंड राइट नाउ आई हैव राया. इट्स लाइक आई डोंट केयर अबाउट गोलकीपर राइट नाउ. गोलकीपर के बारे में मैं भूल चुका हूं. सो yeah, so I have two more transfers and midfield mein Gordon is an issue, but I don't even have funds in the bank to get in Bowen or Bruno Fernandes if I'm correct. Let me just check some midfielders. Bowen is 7.4. Okay, I have exactly funds for Bowen. Bowen versus Bournemouth. Okay, Bowen looks really good for 3 game weeks. I think मैं एक chance देना चाहता हूँ Gordon को for 1 game week. If he doesn't show up, I'll switch to Bowen because it's Leicester at home. Ipswich fixtures of Newcastle. I think my planned transfer was not bad यार. It's just that it didn't turn out. मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ही upside की तरफ देखने लगा. नहीं टिम्बर डिफेंडर आई मीन. हाँ उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं. By the way, anyways, you have made the body. Yeah, I have made the move. Haaland cap done. I'm sorry, Chabadav sent causes. Will quit. I feel if it doesn't haul. Let's go City. इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? मुझे बताइए इसका अर्थ क्या है? He supercharged 500. Okay. Crazy भाई. KSI मतलब is just too much into.
आई थिंक रिको लुइस को मैं रखूंगा आने वाले फिक्चर्स के लिए। इफ सिटी रैंडमली स्टार्ट परफॉर्मिंग तो उसके लिए रिको लुइस काम आएगा। एंड डियास इज बैक, सो दे जस्ट नीड आके और अकांजी टू कम बैक, ईदर ऑफ देम एंड रिको लुइस विल बी फाइन। एवर्टन एट होम, लेस्टर, वेस्ट हैम, बिकॉज सिटी को ग्राइंड आउट करने पड़ेंगे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में, तो इसलिए मैंने अभी रिको लुइस अपने टीम में रखा है। इसके बाद द ओनली प्रॉब्लम इन माय टीम राइट नाउ, फॉरवर्ड्स को मैं इतना सीरियसली नहीं ले रहा हूँ अभी, अनलेस वुड लाइक क्लियरली scores a hat trick or something, उस टाइम तक आई डोंट थिंक, और इवन कूनिया, आई थिंक कूनिया एंड वुड आर probably biggest, have a lot of ownership, so have a lot of ownership, so I'm already going against that in the last few game weeks. I think captaincy we will be a big problem. इसके अलावा I think सिर्फ गॉर्डन एक बहुत बड़ा issue है मेरे टीम में. It's a differential with great fixtures, but just it's not starting यार, start करो. If you win mini league, I'll give you Josie. मैं सेकंड था भाई, लास्ट गेम वीक में मैं सेकंड था, बस ये गेम वीक में थोड़ा फकअप हो गया. Yeah, I mean, I won't be surprised. I won't be surprised. Cunha at home versus Ipswich. Ipswich has been, although kind of being, has played well, even though results are not looking like that. They are doing well in last two game weeks. Will also wear one and Clasico wearing Barca kit. I think this is much more this. ये better है मेरे को, किट की मेरे को जरूरत नहीं है आई थिंक अभी. गिफ्ट योर जोसी, आई डोंट थिंक आई डोंट नीड एनी जोसी राइट नाउ, कोई अच्छी जोसीज है नहीं. दिस जोसी लुक्स गुड दो, दिस जोसी लुक्स गुड. इसके बाद या आई मीन व्हाट एल्स डू आई मेक, एनी मूव्स दैट आई कैन मेक इन माय टीम. कैप्टेंसी में लाइक एक पोल करते हैं, लेट्स जस्ट पुट वन पोल इन द कैप्टेंसी. ओके 9 लाइक्स हो गए, क्रेजी. आई थिंक एवरेज, आई थिंक मतलब लाइक्स में आई थिंक टारगेट शुड बी 10 एवरी गेम वीक राइट. हाँ, सो सोलंकी वर्सेस साउथहैम्पटन. आई थिंक जब भी सोलंकी के फिक्चर्स होते हैं ना, मतलब हॉल करने वाले, उसमें कुछ नहीं करता. बाकी सब में अच्छा परफॉर्म करता है. हु इज द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर स्मिथ रो? लेट मी जस्ट चेक the price of Smith Rowe, that so that I can help you with in that specific price range. Smith Rowe भाई बहुत नीचे है, 5.5. Okay. So I think for one, I think if you have funds, move to Bowen, because Bowen has Bournemouth, Brighton, and Southampton for next 3 fixtures. But if you don't have money, because if you have money, I can give you a lot of options. Bruno Fernandes, Bowen, Rogers. Rogers is probably the best move in terms of if you don't have funds. If you have the exact money, you can move from Smith Rowe to Morgan Rogers. इसके बाद if you have the money, then I would say Bruno Fernandes or Bowen. And I'm hoping that you have these three: Saka, Palmer, or Salah. Mitoma, Semenyo, Enzo, Rogers. Yeah, Enzo probably yes, but Mitoma is not that consistent. Semenyo की जगह Kluivert, what's his name? Justin Kluivert, right? इसको कैसे बोलते हैं? Kluivert को कैसे बोलते हैं? सुवेश मेरे को बता. Kluivert को कैसे बोलते हैं? Justin Kluivert is the penalty taker. Even though Semenyo is like having more shots, I think Kluivert is on. Justin Kluivert is more on pens. So maybe him. Mitoma, I'm not so sure. Is मतलब कभी-कभी बहुत wide हो जाता है Mitoma. Not too many touches in the box. Kluivert बोलते हैं. Justin Kluivert. Okay. Justin Kluivert. Okay. Justin Kluivert. Okay. So the first, I think, options for midfield, Smith Rowe को हटाना है तो I think Enzo is good. I think Rogers is good. If you have money, go for Bruno Fernandes or Bowen. So yeah, I think और कोई differentials है क्या? I think Madueke for this game week, but what are your differentials? Ward, Timber, Jackson, Vardy, Arnold. What do you think about Alexander Arnold? It's all about I think उसका बाप पैट्रिक, हाँ मालूम है, वो मालूम है मुझे, वो तो मालूम है मुझे. ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, इट्स ऑल अबाउट मिनट्स राइट नाउ. आई थिंक यूसीएल में स्टार्ट किया था, बट इट्स ऑल अबाउट मिनट्स. इफ यू गेट्स बैक द मिनट्स एंड उसको बस थोड़ा सा शो करना है. इट्स अबाउट ही हैज टू शो दैट व्हाई ही इज 7 million. I think if he shows that in 2 consecutive game weeks, people are going to get him because the fixtures are good.
These fixtures are like really, really good. In terms of Liverpool, I think Liverpool and Chelsea both have great fixtures in the in the next 10 games. So I think staying at the top is not a problem for them. For City, बेस्ड आई एम इन दिल्ली राइट नाउ बट मेरे दिल्ली वाले लोग मेरे साथ फुटबॉल नहीं खेलते हैं, मेरे पास रहते हैं वो, फिर भी मेरे साथ नहीं खेलते हैं. तो इट्स लाइक इट्स टफ. वी आर इन दिल्ली राइट नाउ. A lot of people in the chat are from Delhi. It's usually my friends or people from the society or I don't know, some group chats or something like that randomly. भाई जी जी यस नहीं खेलना था भाई. सुयश ने रिटायरमेंट ले ली है. Who do we have? Kukureya, Visa is people are still getting him in, but injury concerns. Mono scored a great goal in the last game week. Great goal. I think Mono's numbers are really good. I think in last since game week 9, Isaac has really good numbers. Isliye Isaac is the most gotten player. Watkins is the most sold. Okay, yeah, he's injured. It's a bit pity because I've seen a lot of managers getting Watkins on their wild cards in the last game weeks. Uh, Not bad. I think Watkins आ जाएगा. Watkins आ जाएगा. John Duran is just. I'm in Gurgaon. We can play sometime. Yeah, I'll cook you all. सुयश देख ले धमकी दे रहा है. सुयश देख ले धमकी दे रहा है. गाड़ी निकाल. और कट्टा भी. भाई सुयश नोएडा में रहता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये गुड़गांव में रहता है. किधर आना है बता. Yeah, we can set up something. I think next weekend we can set up. या फिर in the morning, early mornings we can set up. बच्चों को नेट में करता है. आई मीन यस, आई थिंक मजा आता है भाई. उनको सिक्योरिटी दिखाने में बहुत मजा आता है कि मतलब आई एम द ग्रेट. दे थिंक दैट आई एम द ग्रेटेस्ट. पर उनको क्या मालूम कि टर्फ में मैं गोलकीपर बनता हूँ. उनको क्या मालूम. उनको क्या मालूम. इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, क्रिएटिंग पर्सपेक्टिव्स. बकचोदी कर रहे हैं हम बस यहाँ पे. 20 मिनट बाकी है डेडलाइन में, पर कुछ है नहीं करने को, टू बी वेरी ऑनेस्ट. भाई तुमने क्रिस एमडी की रिसेंटली वाली वीडियो देखी जहाँ पे वो माउंटेन पीक्स क्लाइम करता है. इट्स लाइक क्रेजी गुड वीडियो. आई थिंक साइडमैन की लास्ट वीडियो वाज लाइक बहुत बकवास, बहुत बकवास. अंडररेटेड नहीं, अंडररेटेड. ओके. डू वी हैव सम मोर न्यूज़? डू वी हैव सम मोर न्यूज़? डू वी हैव सम मोर न्यूज़? Convention turnout. Okay, let me just check if we have some league news because we have 4 early fixtures. Say we can get a group and set up a game later. Yeah, I think yeah, definitely we can. I think मैं वही सोच रहा था कि मैं अपने Instagram में broadcast का वो. I think I should open it up. How do we do it? I don't know. I'll figure it out. So even if our FPL matches are going on, we can just talk about that in that broadcast. Yeah. Uh, yeah. और क्या मैं बात करूँ? जाओ पेड्रो एट होम वर्सेस क्रिस्टल पैलेस. हाँ, जाओ पेड्रो का जब मन होता है. हाँ, मैं सोलांके की इन दोनों की बात करता हूँ ना, जब भी इनके फिक्चर्स अच्छे होते हैं तब ये लोग कुछ नहीं करते हैं. जाओ पेड्रो और सोलांके. एक मिनट. हाँ, जब इन दोनों के फिक्चर्स अच्छे होते हैं तब कुछ नहीं करते. जब बहुत टफ मैचेस होते हैं जाओ पेड्रो और सोलांके की, तब दे गेट पॉइंट्स. सो दे आर जस्ट बेसिकली वेटिंग फॉर मी टू ट्रांसफर देम आउट. एज सिंपल एज दैट. कैप्टनसी का बताओ यार. कैप्टनसी क्या करने वाले हो सिद्धार्थ? हु इज योर कैप्टन फॉर दिस गेम वीक? आई थिंक सुयश का इज गोना बी हालैंड. राहुल इज जस्ट योर, ही इज एग्जिस्ट. बट राहुल अगर तू खेल रहा होता तो तू किसको कैप्टन करता? एंड whoever is there, who would be your captain for this game week? साला. या डेफिनेटली आई थिंक कोई लीग न्यूज आनी चाहिए यार. मतलब देयर आर 4 early kickoffs. हाउ डू वी नॉट हैव लाइक team news or anything? Whew. He exists. Fees वापस कर. Okay. Fee. Okay. Palmer captain. Yeah. Raya PC. Okay. KG. आई थिंक हमने सबकी बात कर ली है. 15 मिनट पहले हमने सब कुछ बात कर सकते हैं. हम सब कुछ कवर अप कर लिया है मैंने. तो और किसकी बात करें? हम लाइफ में कैसा चल रहा है इसकी बात करें. यार ठंड बहुत बढ़ गई है लास्ट वीक से. हाँ. बट आई मीन उतनी भी नहीं बढ़ी है कि यू हैव टू वेयर स्लीपर्स. आई थिंक डिसेंट ठंड है. नॉट टू मच ऑल्सो. आई थिंक 10 के नीचे गया है. हाँ, 10 के नीचे तो गया है. आई थिंक 4 तक गया है. बट इट्स लाइक एवरेज इट हैज बीन अबाउट 10 डिग्रीज ऑन, यू नो. आई थिंक उतना ठंड नहीं लगा है. हाँ, सीरियसली.
क्या Q&A भाई, क्या Q&A कर Q&A ही कर रहा हूँ मैं। थैंक्स। जॉर्जिया से लाइक आ रहे हैं, जॉर्जिया से लाइक आ रहे हैं। टॉम सैंग मैथ्यू, टॉम सैंग। अच्छा मेरे को अबे अभिषेक, चल तेरे से क्वेश्चन पूछता हूँ। तेरे को सामने स्क्रीन में 3 प्लेयर दिख रहे हैं, साका, पामर और साला। आई डोंट नो तेरे को दिख रहा है कि नहीं। हाँ अब दिख रहा होगा अच्छे से। साका, पामर और साला तीनों के फिक्चर्स बहुत अच्छे हैं। मुझे बता कि तू किसको कैप्टन करेगा। आई थिंक वो चला भी गया है, बट हाँ चलो ठीक है। टॉप 10 फैक्ट्स अबाउट बीजे। सैड करना है क्या तू मुझे? एक काम करते हैं, साला। हाँ साला, क्रेजी क्रेजी। आई थिंक या श्योर, व्हाई नॉट। आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर, अभिषेक तू चेल्सी चेल्सी फैन है क्या? मेरे को मालूम नहीं है अभिषेक का एग्जैक्टली कौन से क्लब को सपोर्ट करता है अभिषेक। मेरे साइड में बैठा रहा पर मेरे को याद ही नहीं है। डोंट वरी, मुझे सुयश का भी नहीं मालूम था क्योंकि वो उस टाइम उतना बात नहीं करता था रिगार्डिंग हिज फेवरेट टीम। वॉज ओके। यस, देख मैं जानता था यू आर अ चेल्सी फैन। क्या मतलब स्विच? क्या ये कैसे स्विच? व्हाट? मैन यूनाइटेड? मेरे को लगा यू आर अ चेल्सी फैन। मैन यूनाइटेड की तो कभी बात करते ही नहीं देखा। गाइस कैप्टन बताओ, जो भी आ रहा है कैप्टन बताओ अपना। मैन यूनाइटेड फैन, क्रेजी। चलो स्नेक, या डेफिनेटली अभिषेक इज अ स्नेक, अभिषेक इज अ स्नेक। चेल्सी ने बहुत दुख दिया है, यस। आई थिंक कुछ। हाँ चेल्सी ने बहुत दुख दिया है, बट हाँ पर तू तो पहले चेल्सी था। मतलब मैं तो तेरे को चेल्सी कंसिडर कर रहा हूँ, फिर मैं तेरे को यूनाइटेड नहीं बोल रहा फिर। इट डजंट मेक सेंस। लेट मी लीग लाइनअप्स, कुछ लीग नहीं आ रहा है। सो लेट्स जस्ट डू वन थिंग। चेल्सी टू यूनाइटेड कौन जाता है? आई डोंट नो इवन, स्पेशली इन द लास्ट डेकेड, हाउ डिड यू गो फ्रॉम चेल्सी टू यूनाइटेड? भाई ये क्रेजी बात है ना सिटी। भाई अभी मेजोरिटी में वही लोग हैं, मेजोरिटी में वही लोग हैं भाई। फेल देंगे तुझे। भाई एक तो अलग ही है भाई, क्रेजी। रियाल तो सिटी को ही खेलती रहती है। चलो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, जस्ट प्रेडिक्शन करते हैं और फिर निकलते हैं। बिकॉज थोड़ा काम भी करना है। लेट्स डू फिक्चर्स के प्रेडिक्शंस एंड जस्ट गो होम बिकॉज देयर इज नथिंग टू डिस्कस। आई थिंक कैप्टेंसी के बारे में मेरा थोड़ा इंस्टिंक्ट भौंक रही है, इंस्टिंक्ट भौंक रही है। आ, वो भी सही बात है, हाँ एग्जैक्टली। फोन ने याद नहीं भाई को। फोन ने भाई, तुम इतनी बार यूसीएल में पिटे हुए हो इनसे, तो मतलब आई थिंक बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो अभी एक बात, कैप्टेंसी में थोड़ा थोड़ा घुसते हैं बिकॉज कैप्टेंसी में वाट लगने वाली है। मुझे फील आ रही है कि कैप्टेंसी में वाट लगने वाली है। इट्स लाइक साला इज प्रोबब्ली द सेफेस्ट ऑप्शन। बट इसके अलावा आई थिंक इफ आई वांट टू गो बॉन्कर्स, आई थिंक आई वुडंट पिक पामर, आई वुड गो साका। भाई लास्ट गेम वीक में मैंने साका को कैप्टन किया था एंड उनने 90th मिनट में साका ने गोल मारा है। मैं इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ। फिर मतलब मार्टिनेली वाज अ यार्ड ऑफसाइड ब्रो। हाउ कैन यू नॉट चेक द लाइन? हाउ कैन यू नॉट चेक द लाइन? मतलब पूरा मूड खराब कर दिया। आई थिंक ऐसा भी नहीं है कि वो पॉइंट से मेरी रैंक बढ़ जाती, बट स्टिल मतलब इट वाज लाइक कि मतलब 575 के आ गया मैं। मतलब इट वाज टेरिबल फॉर कैप्टन, फॉर पामर कैप्टनर्स। वो लोग सीधे 100 के अंदर घुसे हैं। क्रेजी भाई, क्रेजी। आई थिंक गोइंग अगेंस्ट द क्राउड समटाइम्स कैन हिट बैक सो, मतलब हिट बैक इतना गंदी तरह लगता है ना। तो इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द क्राउड इज लाइक समटाइम्स इट काइंड ऑफ रियली हर्ट्स। So I think a lot of captainos will be going for Palmer because of the last game week. But I think safe option would be Salah. I think ownership, expected ownership भी सबसे ज्यादा साले की रहेगी. Let's just keep at Salah and just move on. ठीक है? Last 10 minutes, let's just see और कुछ हमें दिख रहा है. हाँ, let's just see. कुछ लीग लाइनअप्स हमें दिख रही हैं.
he's seen with the squad. What the hell is this? मतलब Gabriel late test है, but he's been seen with the squad. It's weird. Gabriel का चीज है, मतलब Gabriel तो मेरे टीम से निकल गया, अभी तो मैं क्या ही सोचूं मैं. इसके अलावा I don't think I've anything more to share in terms of ईजैक की तरफ देखूं तो ईजैक की तरफ I can move, but it's just about injury news. I think injury concerns about Isaac. उसके अलावा yes, Isaac is a great option to have. I think अगर कोई forwards में किसी को ले रहा है तो the first thing that would come in my mind would be Isaac. Yeah, so let's just do एक काम करते हैं, कुछ नहीं, आई थिंक कोई न्यूज भी नहीं आ रही है, अगर लेट्स डू प्रेडिक्शंस, अगर तब तक कुछ न्यूज आ गई तो अच्छी बात है, बट या तब तक के लिए हम लेट्स डू प्रेडिक्शंस. Arsenal versus Everton, important game for Arsenal. I'll say 3-0 win for Arsenal. Uh, 3-0 win for Arsenal. Liverpool versus Fulham, टाइट गेम होगा, नॉट एन इजी गेम, नॉट एन इजी गेम. आई विल गो अगेन 3-0 विन फॉर लिवरपूल. मेरे को लग रहा है क्लीन शीट आएगी, इवन द फुलहम हैज बीन डूइंग वेल इन द लास्ट फ्यू गेम वीक्स, बट होम टीम है ब्रेंटफोर्ड की जैसे. यस यस यस, ओके. अभिषेक, तू क्या क्या किया है तूने पिछले एक महीने से, मेरे को वो बता. क्या क्या तूने फूका है, ऑल ऑफ दैट मेरे को वो बता. Okay, तो Arsenal 3-0, Liverpool 3-0, Newcastle versus Leicester. Newcastle versus Leicester, this will be a tough game. Tough game, but I think Newcastle will win it. अच्छा मारते. Newcastle versus Liverpool, Newcastle versus Leicester is a tough game to predict here. Tough game. Because Leicester मतलब comeback मारेगी. I don't know. Let's go for 2-1 win for Newcastle. 2-1 win for Newcastle. Yeah, 2-1. 2-1 मुझे भी 2-1 लगता है. I think एक मिनट रुक जा. Wolves versus Ipswich. Wolves versus Ipswich. This will be an exciting game. I think 4-1 win for Wolves. Cunha with a brace. Cunha with a brace. Nottingham Forest versus Aston Villa. Nottingham Forest versus Aston Villa बहुत गंदा गेम होगा. Aston Villa का फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा है, इवन दो उन्होंने मिड वीक में आई थिंक जीते हैं 3-2. एग्जैक्टली मेरे को मालूम नहीं है क्या हुआ एस्टन विला के साथ, but I think Nottingham Forest come back to winning ways, and I think this could be a 0-0 as well. But if either side is winning, I'm going for I think 2-1 win. I think Wolves versus Ipswich will be a high scoring game. मेरे को पता नहीं लग रहा है. Nottingham Forest versus Aston Villa can be a 0-0, but I think I'll go for 3-1 win for Nottingham Forest at home. I think they'll show some dominance. Brighton versus Crystal Palace. Brighton versus Crystal Palace can be a slow game at the starting, but I think second half में goals आएंगे. इसलिए I'm going for 2-1 victory for one at Old Trafford last week. Yeah, 2-2. Okay, yeah, Nottingham Forest 2-2 हो सकता है. Brighton versus Brighton versus Crystal Palace 1-1 बोल रहे तू. Hi bro, how's your team? How's your team looking? Who are you captaining? I'm assuming you have just come right now. So who are you captaining and what's your team? Just for one viewer, we can just reflect on my team. क्यों नहीं कर सकते? कोई नया बंदा है तो क्यों नहीं कर सकते? This is my team. I've just made my one transfer from Gabriel to Saliba. Captaincy is right now on Salah. Who are you captaining? मेरे को बताओ, Max Plug भाई. Tell me who's your captain. So Brighton versus Crystal Palace. Rahul is saying 1-1, but I'll say 2-1. Manchester City versus Man United. I think we discussed about this, and I think I'm going to go for 2-2. I think 2-2 होने वाला है. Open game होगा because I think City, obviously they do not have players and not looking great in form, but United भी खोल के रखती है अपना, तो उस हिसाब से I think 2-2 होना चाहिए. And what this could be a De Bruyne show, because De Bruyne को finally एक ऐसा गेम मिलेगा जहाँ पे वो वापस फॉर्म में आ रहा है, because इतना ओपन गेम रहेगा, De Bruyne टाइप गेम लग रहा है मुझे. It could be a 3-2 win for City as well, but right now I'm going for 2-2. Sanchez, Aitnouri, Korkes, Junintembo, Enzo Palmer, Ahmad, Saka. 4. Okay. João Pedro, Evanison, Cunha. Okay, but you will. Okay, ये आपका बेंच,
Your bench is just too good right now. Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Alexander Arnold. Oh my God, you have double defense of Liverpool. Max Plug has double defense of Liverpool, which is like, I have Gomez. You have spent a lot at a Liverpool defense, and I like it. Malab, you can bench Kirkes and yeah, three at back. I think uh, Timber, Virgil van Dijk बोल रहा था. Virgil van Dijk, Alexander Arnold, then 3-5-2, right? So Salah, Enzo, Palmer, Ahmad, Saka. 3-5 and 2. 2 will be João Pedro and Cunha. Not bad, not bad. I think yeah, I think ऐसे ही रखना चाहिए. But it's there's a probability that your bench might score a lot of points. So next time when you're transferring out players, make sure that you don't have such good players in your bench. It's good to have one or two players who are great in your bench, who can be rotated easily, like Korkes or Ait Nouri. But I think yeah, I think overall it's a really good team. I really like it. Um, yeah, it's a really good. मतलब इसने like it's a really good team, to be very honest. You can rotate a lot, but it's just that you will have a lot of points in your bench. Huh. So we discussed about Manchester City versus Man United. Pretty open game. Just max plug. आप बताओ कि who's your captain for this game week? एक बार check कर लेता हूँ if there is any leak news. कुछ news हमें मिलते हुए. कुछ news. कुछ न्यूज़ हमें दिख रही है क्या? You just name my starting team. Yeah, exactly. I mean that makes sense, right? That makes sense. Why are you using your bench boost? I think save it. I don't want to stop you, but it's like that's my first instinct. Ki save it for double game week or a blank game week or something like that. Salah, of course. Oh yeah, Salah. I mean, yeah, straightforward option. Mine is also locked in on Salah. 4 minutes to go, guys. Lock in your teams if you haven't. 7:15 लाइनअप्स या 7:15 लाइनअप्स तक नहीं रुकने वाला भाई मैं. काम करना है मुझे. अबे नहीं, इन द सेंस लीग लाइनअप्स की बात कर रहा हूँ राहुल. लीग लाइनअप्स की मुझे भी मालूम है 7:15 आती है. मैं लीग लाइनअप्स की बात कर रहा हूँ. ट्विटर में मैं ढूंढ रहा हूँ. लेट मी जस्ट चेक. We have a Cunha news exclusive. We are hearing Cunha starts from bench, on the bench. Okay, not sure that's going to go down amongst the friends. Okay, guys, this is a credible source. Cunha is getting benched. I think that is something, bro. This is exclusive. So आपको इसी stream में मिलता है. bro. You need to have your sources, bro. You need to have your sources. Cunha, one of the most highly ranked players, highly owned, sorry, players, is getting benched. And he's 5.5. So let's just look at Cunha ke alternatives. It's pity that all of my 1 million followers are not watching me right now. It's a pity. Because फिर उनको मैं alternatives बताता. Cunha का price क्या है? I think even Suyesh is not there. Suyesh के पास भी Cunha हो सकता है. Let me see. Now Cunha's price at 5.3. Oh my god. Exclusive. Yay. Okay, stop it. Oh, let me just give you first alternative. एक मिनट रुक जाओ. Fixtures के हिसाब से. First, if you have money in the bank, Isaac. Second option, Nicholas Jackson. Third one, I would say it's between Stan Larson and Vardy. Stan Larson because of the fixtures. Ipswich, Leicester, Man United भी मैं बोलूंगा open. Vardy because of the new manager, or probably this is your time to move from 3-4-3 or 4-3-3 to 3-5-2. Okay, मतलब सिर्फ दो forwards खिलाओ. We've got a news coming in that Cunha is not starting. Let me just send this to the group. Yeah, we've got a news coming in that Cunha is not starting. I think ये news पसंद है मुझे. पता है क्योंकि ownership बहुत उसकी high है and a great fixture. It's not that he cannot score. He can come on from the bench and score. But yeah, 1 minute to go, guys. So lock in your teams. Lock in your teams. Lock in your captain. I think मेरे पास Cunha नहीं है, so nothing to worry about. और let me just check जल्दी से if कोई और हमें news मिलती है यहाँ पे. Okay. Cunha is not benched.
फेक अकाउंट, फेक अकाउंट। मैं तो खुश हो गया था, मैं इतना खुश हो गया था। नो 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 नो, डोंट गेट इन एनीवन, इट्स अ फेक न्यूज, इट्स फेक न्यूज, एक फेक न्यूज है, फेक न्यूज है, जस्ट गॉट इट कंफर्म्ड। मैं शक्ल दिखाने लायक बचा नहीं रहा अभी वैसे तो। डोंट गेट इन एनीवन, इज जस्ट इज देयर, ही इज गोना स्टार्ट। जस्ट सम सैड लिटिल लूजर एट होम विद टाइम ऑफ हैंड्स, आई मीन यार डेफिनेटली। हाँ, लिवरपूल, ओके, लिवरपूल की टीम भी आ चुकी है अपेरेंटली। साला, गैक्पो, लुइस डियास। Oh, Gakpo is a great shout. Okay. This like yeah, I think Liverpool की टीम आ गई है, but yeah, deadline has passed, guys. Deadline has passed. Thank God I didn't save my team. Yeah, definitely. Yeah. Huge bait, yeah, मतलब ऐसा होता है, ट्विटर में ऐसा ही होता है, अब क्या बोलें। तो जल्दी से टाइम अप हो चुका है, द डेडलाइन हैज पास्ड गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर दिस गेम वीक। आई थिंक लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हाउ मेनी पॉइंट्स आई कैन गेट फॉर दिस गेम वीक। गेम वीक की हम बात करें तो राया से आई थिंक 6 पॉइंट्स मिल सकते हैं, ऐसा नहीं, 6 प्लस 6 12। गोमेज आई से 6, आई एड अप, आई थिंक मैं 18 पॉइंट्स बोलना चाहूंगा, एंड 2 पॉइंट्स फ्रॉम माइट नूरी, सो 20 पॉइंट्स फ्रॉम माय डिफेंस। मुझे मैक्स आयन भाई से पूछ, जो भी है मैक्स आयन भाई से पूछ के ही कर यार। ओह माय गॉड, अफिलिएट लिंक लगा रहा है यहाँ पे। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मतलब तू जॉर्जिया से अभी कैसे देख रहा है, मुझे वही, मेरे को वही हैरानी आ रही है, वापस कब आ रहा है वो बता। आई थिंक बर्गर खाएंगे हम फिर से। 20 पॉइंट्स फ्रॉम द डिफेंस। मिडफील्ड से I'll be optimistic about this game week. Let's just go for 22 or 24 points from Salah. So around 44 इन दोनों को मिला के I'm putting 16 points. इन दोनों में से एक तो हॉल करेगा ही। So 44 16 I'll say 60 points आ गए। 60 points हम लोग के अभी तक आ गए। गॉर्डन से एक असिस्ट एक्सपेक्ट करूंगा तो 65, ठीक है, 65 पॉइंट्स अभी तक आ चुके हैं। फॉरवर्ड्स में मैं गेस करूंगा, फॉरवर्ड्स में आई वांट टू टू परफॉर्म, बट आई एम सेइंग इन दोनों में से एक कोई मारेगा तो 6.66। एंड निकोलस जैक्सन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आई थिंक ही कैन गेट अ 10 पॉइंटर। So I'm guessing my points, if Salah hauls, then 75. 75 is what I'm looking at right now. So 75 is not bad considering last game week मेरा इतना, मतलब रेड आरोज अब राइट में देख ही सकते हो। So yeah, अब थोड़े बस खत्म करते हैं। और जुलाई, या 11 लाइक्स हो चुके हैं। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। आई मीन 10 ही हो गए, बहुत बड़ी बात है। 75 65 not far away, yeah, but I just want to hit that 70 का spot, hit that। तो अभी चलो चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड करते हैं। आई थिंक ब्रेंटफोर्ड रिस्पॉन्ड करेगी। आई गो फॉर 4-2। अच्छा नहीं, लास्ट गेम वीक में ही दूंगा। आई गो फॉर 3-2 विन फॉर चेल्सी वर्सेस ब्रेंटफोर्ड। Southampton versus Spurs, I think Southampton can cause an upset. Overall rank is around 575k right now. Last game week it was around 300 something, but I did not captain Palmer, so it's right now 575k. Hi Jonathan, I think you are just a bit late. Hi Jonathan, a bit late to the stream because the deadline has passed. Even though I can show you my team, it's like I've made one transfer. I've gone from Gabriel to Saliba, and I've captained Mohamed Salah. Yeah, that's it. That is it right now. On my bench, I have Rico Lewis, nothing else. So, Jonathan, bhai, who have you captained for this game week? You are a bit late. Deadline has passed, but it's fine. We are doing the predictions right now, and I think Southampton versus Spurs. I think Southampton can cause some kind of an upset, but I'm going for 3-1 win for Spurs right now. But I think Southampton ऐसा है कि वो upset कर सकती है. Maybe, probably, what if it's like a horrible game for Spurs and the manager gets sacked? I mean, that is a possibility, right? Mine's 86, 88k. Wow, that's crazy. I'm sure you have captain Palmer in the last game week, which is pretty good. Do share your team ID, or you can join my league, which is in the description, so I can view your team. You could be on top of my league. Yeah. तेरी टीम ही उठा लेता हूँ जी। ओके श्योर। नहीं, तो अच्छे से बना, मैं बोल रहा हूँ मेरी टीम उतनी भी खास नहीं है। या what if Southampton wins here and Spurs manager gets sacked? I mean, it's a possibility, but I'm going 3-1 win for Spurs right now.
Last game week, last fixture, sorry, Bournemouth versus West Ham. I think West Ham जीत जाएगी. I think West Ham जीतेगी 3-2. Or I don't know. It's tough. It's tough. So I'll just go for 2-2. 2-2. Bournemouth 2, West Ham 2, and this is it, guys. Whoever has joined for this game week stream, and thank you to I think Abhishek for joining from Georgia. मतलब I think मतलब क्यों ही देख रहा है मेरे को वही समझ नहीं है. But thank you for joining in, ठीक है, guys. And yeah, this is the team for uh, game week 16 and league code. Okay, league code. You can find in the description. Description में you have the link to Instagram, and on the pinned post, on the first pinned post, you will have the link, or not the link, sorry, the league code. Okay, so you can join in from there. Okay. The winner of that league, by the way, is getting a free jersey. So yeah, so you can just top the league. Uh, so that is it, guys, for this game week, and thank you for joining in. तब तक के लिए मिलते हैं next game week में.